जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इन्फो एकेडमी में। आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक नई वीडियो लेकर। आज हम NTA UGC नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के हाल ही में दिसंबर 2021 में हुए पेपर को डिस्कस करेंगे। लाइब्रेरी साइंस के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी से संबंधित बहुत सी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की है, जो आपके लिए काफी उपयोगी होंगी और आपको उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं लेटेस्ट सॉल्व पेपर का पहला भाग। पहला प्रश्न है, विच प्रिंसली स्टेट पास्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रायर टू इंडिपेंडेंस? स्वतंत्रता से पहले किस रियासत ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था? इसके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी कश्मीर, सी कोल्हापुर, डी राजपुताना। इसका आंसर है कोल्हापुर। स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर रियासत ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट एक्सपर्ट असिस्टेंट्स फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। इसके ऑप्शन है ए डीपी, बी प्रोस्पेक्टर, सी रिएक्टर, डी मिसीन। इसका जवाब है बी सी डी, यानी कि बी प्रोस्पेक्टर, सी रिएक्टर, डी मिसीन। Next, question number 3. Arrange the following software according to their year of origin in chronological order. यानी कि निम्नलिखित सॉफ्टवेयर को उनके मूल वर्ष के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। A. Dispatch, B. Apprentice, C. GSDL, D. Onka। इसका उत्तर है C, B, A and D। पहले आया GSDL 1997 में। GSDL मीन्स ग्रिंस्टॉन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर। फिर ePrints 2000 में, फिर दी स्पेस इन 2002 में और फिर ओंका 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू UNESCO, व्हाट इज द स्लोगन फॉर द वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 2020 ऑब्जर्व्ड ग्लोबली? यूनेस्को के अनुसार विश्व स्तर पर मनाया जाने वाला विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2020 के लिए स्लोगन क्या है? इसके ऑप्शन 1. Books a window into the world during COVID-19. 2. Books are for use. 3. Globalization of reading material during COVID-19. 4. Improve the reading habit. इसका उत्तर है Books a window into the world during COVID-19. Next, question number 5. A device that interconnects two or more networks and selectively interchanges packets of data between them is known as। एक उपकरण जो दो या दो से अधिक नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और उनके बीच डेटा के पैकेट को चुनिंदा रूप से इंटरचेंज करता है, उसे कहा जाता है। ऑप्शन है 1. गेटवे, 2. हब, 3. राउटर, 4. स्विच। इसका उत्तर है राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स of the Advisory Committee for Libraries 1957? यानी कि निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति के सदस्य थे? इसके ऑप्शन है अ बी एस केसवन, बी एस आर रंगनाथन, सी पी एन कौला, डी ए पी श्रीवास्तवा, डी आर कालिया। इसका आंसर है बी एस केसवन एंड डी आर कालिया ओनली। नेक्स्ट, question number 7. Arrange the steps of the digital reference model derived from Lakes 1998 and Virtual Reference Desk Project 1998 in the correct sequence. इसके ऑप्शन है A. Triage, B. Experts answer formulation, C. Tracking, D. Question acquisition, E. Resource creation। आंसर पहले D question acquisition, फिर A triage, B experts answer formulation, C tracking और लास्ट में E resource creation। Next question, match list 1 with list 2। इसमें मार्क टैग और उसकी फील्ड्स का आपस में मिलान करना है। S020 टैग और फील्ड मार्क्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ISBN B100 marks a personal name main entry author। C300 marks the physical description। D700 marks a personal name added entry। अगला क्वेश्चन, इस टाइप का प्रश्न हर बार पूछा जाता है
Arrange the following public libraries acts according to their year of enactment in ascending order. निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमन के वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ए. गुजरात, बी. छत्तीसगढ़, सी. राजस्थान, डी. गोवा। इसका सही ऑर्डर होगा डी, ए, सी, बी। सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ गोवा में 1993, गुजरात 2000, राजस्थान 2006 and छत्तीसगढ़ 2009. Next question. The first virus recorded, the Creeper virus, was written by. क्रीपर वायरस को रिकॉर्ड करने वाला पहला वायरस किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन ए. बॉब थॉमस, बी. फ्रेड कोहेन, सी. मार्टिन हेलमान, डी. वहतमान डिफ्टिये। इसका आंसर है बॉब थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से वेब प्रोग्रामिंग भाषाओं की पहचान करें। ए. रूबी, बी. PLI, सी. SQL, डी. पाइथन। इसका करेक्ट आंसर है ए. रूबी, बी. PLI, डी. पाइथन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर निम्न में से कौन सा डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर है? ए. वॉसविवर, बी. झोटेरो, सी. मिनिटिव, डी. एनविव। इसका आंसर ACD. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एसिंक्रोनस रेफरेंस ट्रांजैक्शंस? निम्नलिखित में से कौन एसिंक्रोनस संदर्भ लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है? ए. ईमेल, बी. वेब फॉर्म, सी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी. आस्क अ सर्विस, ई. डिजिटल रेफरेंस रोबोट। इसका करेक्ट आंसर है ए, बी and D only. Next question, who devised the role-based model of digital reference? डिजिटल संदर्भ का भूमिका आधारित मॉडल किसने तैयार किया? ऑप्शन ए. जी चौधरी and S. चौधरी, B. J. M. Vasik, C. M. McLennan, D. R. D. Lenkers. आंसर है M. McLennan. Next question, match least one with least two. इसमें ऑफर और उनके सोर्स का आपस में मिलान करना है। ए के दास गुप्ता और सोर्स है एन essay in personal bibliography. B. A. M. Levin, systematic bibliography. C. T. Westerman, the beginnings of systematic bibliography. D. Leroy Harold Linder, the rise of current composite bibliography. Next question, Reference and User Services Association is a division of. Option A. Association for Information Science and Technology. B. American Library Association. C. Medical Library Association. D. Society of American Archivists. इसका सही उत्तर है American Library Association. Next question, which among the following are the examples of descriptive metadata? Option है A. Finding aids. B. Specialized indexes. C. Selection criteria for digitalization. D. Curatorial information. Answered A, B, and D only. Next question. The first version of Unicode was 1. 16-bit encoding, 2. 32-bit encoding, 3. 64-bit encoding, 4. 8-bit encoding. Answer है 16-bit encoding. Next question. Mobile app. BARD is meant for people with. Option are A. Hearing impairment, B. Mental illness, C. Speech and language disability, D. Visual impairment. इसका जवाब है visual impairment. Next question. Arrange the following e-learning initiatives related to higher education in India in chronological order. A. Swayam Mukhas, B. E-Gyankosh, C. EPG Pathshala, D. NPTEL. इसका सही ऑर्डर है B, D, C, A. अगला प्रश्न, Who was the founder of Project Gutenberg? ऑप्शन है A. Edmund Hillary, B. John M. Ritchie, C. M. Gutenberg, D. Michael Hart. इसका जवाब है Michael Hart. Next question, in UNESCO Conceptual Model of Media Information Literacy MIL 2013, which one of the following circle represents? The information resources
and the means by which information is communicated. A center circle. B. The second circle from the center. C. Third circle from the center. D. Final circle. Answer है center circle. Next question. National Center for Children Literature NCCL is related to A. CBSE, B. NBT, C. NCERT, D. RRRLF. Answer NBT means National Book Trust, India. Next question. A publisher offers free access to articles for a week's or a month's time. Under which open access license will the accessibility option fall? Option है A. Bronze OI, B. Golden OI, C. Green OI, D. Platinum OI. Answer Bronze OI. Next question. Theodore Holm Nelson founded Project Xanadu in the year. Option है A. 1958, B. 1907, C. 1972, D. 1979. Answer 1960. Next, the special library must, for instance, make much more use of what has come to be known as documentation than the general library stated by Hope. Option A. Akas L.G. S. Josephson, B. John Cotton Data, C. Paul Eichlet, D. Richard H. E. Johnson. Answer है Akas L.G. S. Josephson. Next, which of the following are not posteriorizing common isolates according to Collin Classification 6 Revised Edition? Optioned institution, learned society, bibliographic table. Iska answer C and D only. Next question. An invitational metadata workshop organized at Dublin in 1995 and treated as the birthplace of contemporary metadata was sponsored by Option A. National Center for Supercomputing Application, B. Institute of Electrical and Electronics Engineering, C. Online Computer Library Center, D. International Electrotechnical Commission. Iska answer A and C only. Next question. Match least 1 with least 2. Isne hame match the Digital Library Initiative with the institution involved during their inception creation. A. Alexandria Digital Library or institution है University of California, B. Rajiv Cornell University, C. Universal Digital Library, Carnegie Mellon University, D. Project Gutenberg, University of Illinois. Next, arrange the following with their year of establishment in ascending order. Option है A. American National Standards Institute, B. International Telegraph Union, C. Internet Engineering Task Force, D. World Wide Web Consortium. इसका correct answer पहले B 1865, A 1918, C 1986 and D 1994. Next question. According to the UGCC Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Educational Institutions Regulation 2018, if any person suspects plagiarism in any document, who should as he report it to IAIP Institutional Academic Integrity Panel, though DEIP Departmental Academic Integrity Panel, Team HHEI Head of the Higher Education Institution, Char UGC University Grants Commission. Answer hai DAIP. Next question. Which of the following is not a high-level class or entity in the BibFrame model? Option R. BibFramework, BibFrame Instance, BibFrame Item, BibFrame Title. Answer BibFrame Title. Next question. Match list 1 with list 2. A. Quantitative approach. ये related है PRTCPM. B. Scientific management, Gantt chart. C. Behavioral approach, Theory X and Theory Y. D. Organizational approach, bureaucratic structure. Next question. Arrange the following layers in their correct sequence in the OSI model. Option है A. Network layer, B. Physical layer, C. Presentation layer, D. Data link layer, E. Application layer. Correct sequence है B, D, A, C and E. Next question. An important academic social networking site, ResearchGate, was founded by A. Ejad Medish, B. Soren Hofmeyr, C.
Horsat Fikinskir. D. Brian Acton. E. Chencom. Answer: Ejad Medish, Soren Hofmeyr, and Horsat Fikinskir. Next question. As per APA reference style 6th edition, for a journal article, which sequence of bibliographical elements is correct in the context of reference structure? Option are: A. Author of the article. B. Title of the journal. C. Title of the article. D. Year. D. Pages. Answer: A, D, C, B, and E. Next question. Who offered the book Practice of Management? इसके ऑप्शन है पीटर ड्रुकर, हेनरी मिंटरबर्ग, हेनरी फ्योल, फ्रेडरिक टेलर. Correct answer है Peter Drucker. Next question. According to S. R. Ranganathan, spot subject is a. इसके ऑप्शन है 1. Subject formed by coupling two or more subjects. 2. Subject of great extension and enormous intention. 3. Subject of small extension and great intention. 4. Subject of great extension and small intention. Answer है subject of small extension and great intention. Next question. Under the RTI Act 2005, which person cannot submit a complaint to the Central Information Commission or State Information Commission, as the case may be? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका आंसर है who approaches directly to CIS or SIC without approaching CPIO or SPIO, as the case may be. Next question है which of these are based on Linux? इसके ऑप्शन है Fedora, Solaris, Ubuntu, Debian. इसका correct answer A, C or D. Next question. Fill the blanks is a suite of protocols that were developed by the Department of Defense to provide a highly reliable and fault-tolerant network infrastructure. Option है DHCP, VPN, POE, TCP/IP. Answer है TCP/IP. Next question. According to Copyright Amendment Act 2012, in case of photographs, the term of copyright is revised to. Option है 10 years, 20 years, omitted 60 years. Answer 60 years. Next question. Who said a number of basic human needs can be identified from the social and psychological functions of the mass media? Option है William Kutch and Bill Kutch, M.A. Sandalovsky and H. Hassett. E. Kutch, M. Gurevich and H. Hassett, Sul Echerly and Celia Hales Mabry. Answer E. Kutch, M. Gurevich and H. Hassett. Next question. In the context of the spiral of scientific method, the verification phase is represented between which 2 cardinal points? Option है 1. Nadir and ascendant. 2. Ascendant and sanat. 3. Descendant and sanat. 4. Descendant and nadir. इसका उत्तर है descendant and nadir. Next question. As per UGC Promotion of Academic Integrity and Prevention of Plagiarism in Higher Education Institutions, Regulations 2018, which penalties in case of plagiarism in academic and research publications shall be imposed? इसका सही उत्तर है A. Similarity above 10% to 40% shall be asked to withdraw the manuscript. D. Similarity above 40% to 60% shall be denied a right to 2 annual increments. और इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है which of the following are true about the JADE 39.50? और इसका आंसर है A. It is an international ISO 23950 standard. C. It was originally approved by the National Information Standards Organization NISO in 1988. तो दोस्तों यह तो थी NTA UGC NET लेटेस्ट सॉल्व्ड पेपर का पार्ट 1. मैं बहुत जल्द इसका पार्ट 2 आपके सामने लेकर आऊंगा. कृपया अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की जानकारी लगातार मिलती रहे. और इसी तरह की लाइब्रेरी कंपटीशन एग्जाम से संबंधित वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जो आपके लिए काफी उपयोगी साबित होंगे. अंत में इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया. जय हिंद, जय भारत, नमस्ते.